तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा आया था क्वेश्चन पेपर में, राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब ये जो ये हमने करा था ना, अब यहाँ पे जो हमें सवाल पूछा गया वो तो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल का। तो पहले आंसर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल we need the actual binary value first. But your question says convert binary equivalent minus 2, 3, 4, 5, 6 in decimal. This seems to be a bit unclear. Let's interpret carefully two possible interpretations. Minus 2, 3, 4, 5, 6 to binary and back to decimal. If that's the case, here's how it works. Step 1, convert 2, 3, 4, 5, 6 to binary. We convert the positive value first. 23456, which is decimal value, and will be converted into binary, which will give us 0101101110110000. Okay. Step 2, represent minus 23456 in binary using 2's complement 16 bit. First, write 23456 in binary 16 bit. Now take 2 complement, invert plus add 1, इन्वर्ट। तो आ गया इन्वर्ट करके 10101000010001001111। फिर उसमें ऐड करना है 1। जब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो जब हम पहले इन्वर्ट करते हैं और फिर उसका जो टू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसमें हमें ऐड करना होता है 1 पर, बट हम लास्ट से ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 1 मिलके 0 हो जाएगा। 1 में 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर में सब 0 और 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया और 1 वो होगा हमारा कैरी। तो फिर से 1 1 0 हो गया, 1 1 0 1 1 0 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, फिर ये हमारी वैल्यू मिलेगी 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0। So minus 2 3 4 5 6 in 16 bit 2's complement binary is 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 blah blah blah। इसे डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करते हैं, two's complement back to decimals, which will give you minus 2 3 4 5 6 informing it's correct। अब इसमें क्या है, वैसे तो इन्होंने सिर्फ हमें वो करने के लिए बोला है। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं ना, तो हमें अगर हम खुद से अगर बता रहे हैं कि ओवरफ्लो है कि नहीं, वो भी बता सकते हैं। इसमें नहीं बोला तो फिर हमें जरूरत नहीं है। फिर फाइनल आंसर आता है the decimal equivalent of the binary seconds complement blah blah blah, which is minus 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 3 4 5 6 बाइनरी डिजिट हम लिख रहे हैं तो उसका बेस लिख लेंगे साथ में। तो अब ये 299 का है, बिल्कुल सेम चीज करनी है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो उसमें टू कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड डेसिमल 299। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। ठीक है, तो जैसे ये डेसिमल नंबर है लेकिन ये पॉइंट में नहीं है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हमारे हमारे जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो 0 है, लेकिन वो अब यहाँ पे है ही नहीं विजिबल, तो हम उसे नहीं लेंगे। सिर्फ इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अगर फ्रैक्शन पार्ट होता तो उसे मल्टीप्लाई करते और उसका इंटीजर पार्ट सेव करके रखते। जैसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट में इधर आंसर मतलब सॉरी इधर है ना 299, पॉइंट अगर 1 होता है या 2 होता है या 10 होता, कुछ भी होता, उसका जो भी फ्रैक्शन पार्ट से हमें इंटीजर मिलता है वो हम पॉइंट के आगे लगाते हैं। तो इसका जैसे इन्होंने किया है 17.89, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वी कन्वर्ट द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। होल 17 1001 आया, तो कैसे आया, वो इधर से आया है। जब भी हम करते हैं डेसिमल का हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करेंगे इंटीजर पार्ट को और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही। ठीक है, क्योंकि उसका जो बाइनरी का जो बेस है उससे करेंगे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर इसे हेक्साडेसिमल में करना होता है या ऑक्टल में करना होता है तो उनके बेस से करना होता है, तो उनके बेस से ही मल्टी डिवीजन होगा यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही इन्होंने करा, डिवाइड किया, जिससे इन्होंने जो क्या बोलते हैं रिमाइंडर पार्ट था उसको बस उठाया। तो जब ये फाइनल डिवाइड करते 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 ऐसे बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं हम्म तब जो पॉइंट वाले होता है उसमें जो पॉइंट के पहले होता है उसमें तो हम 2 से डिवाइड डिवाइड करते हैं। करते हैं, बट जो पॉइंट के बाद होता है उसको हम
वो मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक पॉइंट जो है तक रिमाइंडर आंसर की में वन टर्म ना आ जाए। नहीं, जब तक करते हैं जब तक जो हमारा पॉइंट वाला जो है ना, ये पॉइंट के हम्म। आगे यहाँ पर हमारा जीरो ना हो जाए, और वो जो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर जीरो बचेगा और वो आगे चले जाएगा। जैसे सोच लो, जैसे यहाँ पर 60 है, तो वो मल्टीप्लाई करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और यहाँ जीरो जीरो बचता है और वो आगे चले गए। जैसे हम प्लस करते हैं ना पॉइंट के सवालों को, हम्म। जैसे नाइन नाइन, सॉरी, 9 और 1 10 हो गया, जीरो यहाँ पे बचा, 1 उधर चले गया, और सोच लो यहाँ पे भी 9 था, तो 9 और 1 फिर से 10 हो गया, जीरो यहाँ बचा, फिर 1 इधर आ गया, तो यहाँ हम्म। पे जीरो से मतलब अब आगे नहीं जाना। बट हम्म। उसका जो वो होगा, क्या नो नो, बोलते हैं, उसमें हम कितना भी जा एंड सकते हैं, वन हो कितना जाता है। कितना भी जा सकते हैं। देखो उसमें लिखा है एंड सो ऑन, तो मतलब कितना जा सकते हैं। एंड सो ऑन इसलिए क्योंकि फिर उसके बाद आगे भी उसका यही आंसर आया होगा, 89। की concept at a glance. First, unsigned binary conversion is simply dividing by 2 and recording remainders. There have floating point numbers split into whole and fractional parts. Third, have fractional binary uses multiplication by 2. Take the whole number part as your next digit and continue with the remaining fraction. Explain the importance of locality of reference with the help of an example. Solution. Importance of locality of reference. The principle of locality of reference is crucial in computer architecture because it allows system to optimize memory access and improve overall performance. Here's why it's important. Improve cache efficiency. Locality ensures that frequently or recently used data is likely to be accessed again soon, temporary locality, or that nearby data will be needed. Spatial locality. This means data can be stored in fast cache memory, reducing the need to access lower main, which is RAM. Faster program execution. Since cache memory is much faster than RAM, using locality reduces memory access time, making programs run quicker. Third, optimize memory hierarchy design. Modern computer systems have a hierarchy: registers, cache, RAM. This locality helps manage data movement efficiently between these levels, especially in multi-level cache systems L1, L2, L3. Fourth, the better performance in loops and arrays. Many programs use loops and arrays, which naturally benefit from locality. For example, iterating over an array uses spatial locality, and repeatedly updating a variable uses temporal locality. Fifth, energy efficiency. Accessing data from cache consumes less power than accessing main memory or disk. Efficient use of locality reduces energy usage. Accessing data from cache consumes less power than accessing main memory or disk. Efficient use of locality reduces energy usage and purposes. Summary benefits: faster memory access, improved CPU performance, efficient program execution, lower energy consumption. How locality helps. Uses cache for recent nearby data. Reduces time for data, common in loops, function calls, etc. Less frequent access to lower memory levels. The overview: importance of locality of reference. Locality of reference is a key concept in computer organization that significantly improves system performance. It refers to the tendency of programs to access the same memory location repeatedly, temporal locality, or nearby locations, spatial locality. Its importance lies in the fact that it helps speed up memory access by using cache memory efficiently, enhance data performance by reducing delays in fetching data, support efficient memory hierarchy, reduces cache RAM, disk, optimize loops and array performance in programs, reduce energy consumption by minimizing access to slower memory. In short, locality of reference plays a vital role in designing faster and more efficient computer systems. Question C. What is the role of a flag register in 8086 microprocessor? Can it be used as a general purpose register? Solution: role of the flag register in 8086 microprocessor. The flag register in the 8086 microprocessor is a 16-bit register used to indicate the status of the processor and control
certain operations. It contains a set of status flags and control flags. Main role of the flag register indicates the result of operations after arithmetic or logical operations. Certain flags are automatically updated. For example, zero flag ZF set if result is zero. Sign flag SF set if result is negative. Carry flag CF set if there is a carry out from MSB. Overflow flag OF indicates arithmetic overflow. Parity flag PF set if result has even number of calls. Controls the processor's operation. Trap flag PF used for single step debugging. Interrupt flag IF enables or disables interrupts. Direction flag DF controls string processing, direction, increment and decrement. Structure of the flag register 8086. Structure of the flag register 8086. Can it be used as a general purpose register? That was the question. So we can read it. No, the flag register cannot be used as a general purpose register. It is dedicated to storing the status of operations and controlling CPU behavior. It cannot store user data like general purpose register AX, BX, CX, etc. Summary. The flag register in 8086 stores status and controls flags that reflects the outcome of operations and manage processor functions. It is essential for decision making in conditional instructions like JZ, JC, etc. It cannot be used for general purpose data storage or arithmetic overview. Flag register in 86. The flag register holds status and control flag, indicating the results of operation and managing signals. It is essential for decision making, but cannot be used as a general purpose register because it's reserved for processor control, not data storage. The question D. List and explain any four data transfer instruction of a computer. MOV, the move function, copies data from a source to a destination. We know about it. Example, MOV AB, copies the content of register B into register A, use transfer data between the memory and I/O ports. Second, load, LD, function, loads data and memory into a register. Example, LD R1 loads the data stored at memory address 1000 into register R1. Use fetches data from memory for processing. Third, store SD function stores data from a register into memory. Example, SD 2000 R2 stores the content of register R2 into memory address 2000. Use saved results or data back to memory. Fourth, exchange XCHG, HG. Function swaps data between two register between register and memory. Example, XCHG AB exchanges the contents of register A and register B. Useful for temporary data swaps without extra memory. Overview for data transfer instructions. MOV move copies data from source to destination. We have from the output. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय कन्वर्टिंग देम टू 8 बिट असाइन टू टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। फिर पहला क्वेश्चन है 56 एंड प्लस का 56 है एंड माइनस का 56 है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप 1 में है कन्वर्ट कर रहे हैं 56 को 8 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी फॉर्म ये हो गई है। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऐसे लिखते हैं। एंड स्टेप टू में कन्वर्ट कर दिया 56 को बाइनरी में, ठीक है। फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया क्योंकि वो माइनस में है, तो माइनस में हम लिखते नहीं, उसका टू कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। फिर टू कॉम्प्लीमेंट निकाल के ये होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये निकला है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये वाला -56 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया, जो भी हमने निकाला उनको सिंपली प्लस कर देंगे। इसमें प्लस कैसे करते हैं, 0 0 0 होता है और 0 1 1 होता है और 1 1 1 होता है और आगे ये कैरी आ जाता है 1 पे, तो इनको प्लस किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर नो कैरी बियॉन्ड 8 बिट, ठीक है। स्टेप 4 में क्या किया,
कन्वर्ट रिजल्ट टू डेसिमल, तो इसका आंसर 0 आ गया। ओके, तो 0 आना चाहिए था क्योंकि 56 और -56 का आंसर एक्चुअली मैथ्स में करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारा आंसर सही है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है प्लस का 121 एंड प्लस का 8, तो इसका आंसर 129 आना चाहिए इन डेसिमल। तब हम बाइनरी में करते हैं क्योंकि बाइनरी में करने को बोला गया है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे 1 to 1 को डेसिमल में, तो उसकी फॉर्म ये आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हमने 8 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, उसको भी ये आ गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करके हमारे पास ये आ गया है, जो कि आंसर एक्चुअल में 1 to 9 ही होगा, बट इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, लिखा है, ओके ओके। इंटरप्ट द रिजल्ट, उसको इंटरप्ट करेगा। द एम एस पी इज 1 नेगेटिव नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड, इन्वर्ट बिट्स 0 1 1 1। ओके, इसका कुछ है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला 127 सो रिप्रेजेंट्स -127। ठीक है, चेक फॉर ओवरफ्लो, adding two positive numbers gave a negative result. Overflow occurred. The actual sum is 121 plus में 8 is equal to 129, जो कि होना चाहिए था which is outside the 8 bit assigned range। अच्छा, तो ये रेंज से बाहर हो जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ नेगेटिव साइन वगैरह कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है ना, जो इंट होता है उसके साइज में 8 बिट ही आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 नंबर ही आना चाहिए। तो ये 8 को एग्जिस्ट आगे आगे मतलब इसके नंबर बढ़ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये थोड़ा बहुत कुछ अलग सा शो कर रहा है नेचर। -128 टू +127। आंसर सेकंड, रिजल्ट इन 8 bit साइन टू कॉम्प्लीमेंट इज दिस विच इज माइनस का 127। ओवरफ्लो occurred। ओवरफ्लो अकर्ड क्यों हुआ? क्योंकि 8 बिट से ज़्यादा इसका आंसर आ गया। ऑपरेशन रिजल्ट, ओके, समरी है ये। ठीक है, समरी यहाँ पे दिख रही है, तुम्हें देखना हो तो देख लेना, बाद में वीडियो में रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एफ बट इज एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस, लिस्ट मेजर फंक्शंस ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो सबसे पहले इसने बताया व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस। एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट और circuitry that acts as a bridge between the CPU or memory and peripheral devices like keyboard, printers, disk drives. It manages the communication and data transfer between the processor and external devices. Major functions क्या होता है IO इंटरफेस का? सबसे पहला है डाटा बफरिंग, temporary stores data during transfer between CPU and input output devices to handle speed differences, and second है data transfer, controls the actual movement of data between device and the processor/memory. Third है device control and command interpretation, sends control signals to devices and interrupts commands from the CPU. And fourth है status reporting, provides status information of the device. Example है ready, busy, error to the CPU. Fifth है error detection, detects errors during data transfers and reports to the CPU for handling. And sixth है data format conversion, converts data from the format used by devices to the format understood by the CPU and vice versa. अब इस क्वेश्चन का ओवरव्यू क्या रहेगा? एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज एसेंशियल फॉर लिंकिंग द सीपीयू विद पेरिफेरल devices, ensuring smooth, controlled, and reliable data exchange by handling buffering, control status reporting, error detections, and data conversion. And अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, with the help of ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द concept of direct memory access. Solution है, certainly here's an explanation of direct memory access with a block diagram and a short overview. ठीक है, what is a direct DM है, direct memory access. DM is a technique that allows peripheral devices to transfer data directly to or from the main memory without involving the CPU for each byte or word transfer.
This improves system efficiency by freeing the CPU to perform other tasks. अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा गंदा तरीके से बना है, बट ठीक है, काम चला हुआ है, ऐसा बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू हो गया, peripheral डिवाइसेस कनेक्ट है। ओके, peripheral डिवाइस डायग्राम देख लेना अगर किसी को डाउट वगैरह हो तो डायग्राम कुछ होता है उस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द डीएमए कंट्रोल्स मैनेजेस द डाटा ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। ये तो समरी है कि the CPU initiates the transfer, but is not involved in the actual data movement. DMA transfers data directly to from main memory and the input-output device. How DMA works: CPU sets up the DMA controller with source, destinations, addresses, and data sizes. DMA controller takes control of the system bus. फिर थर्ड है data is transferred directly between memory and device. फोर्थ है once done, DMA controller sends an interrupt to CPU to initiate completion. ठीक है, ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। DMA allows devices to transfer data directly to memory without CPU involvement. In each transfer, improving system speed and efficiency by reducing CPU overhead. Question H. Write an 8086 assembly program that interchanges the value of two memory locations. Solution है हमारे. Certainly, here's a simple 8086 assembly program that swaps the values of two memory locations along with a short overview. 8086 assembly program to swap two memory locations. Data segment लिखा हुआ है. Data segment ये है डेटा सेगमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा डेटा एंड्स, फिर आएगा कोड सेगमेंट, स्टार्ट आएगा ये कुछ असेंबली लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन। वेरिएबल 1 and variable 2 are two memory bytes holding initial values. दूसरा, the program loads the value of variable 1 into AL and variable 2 into BL. Then it stores the value from BL into variable 1 and from AL into variable 2, effectively swapping them. फिर हमारा overview पढ़ लेते हैं. This program swaps the contents of two memory locations by temporarily storing one value in a register, then exchanging the values between the two locations using 8086 instructions. फिर हमारा आता है question I. How are characters recognized by voice-based input device? Solution. How characters are recognized by voice-based input devices? Voice-based input devices recognize characters through a process called speech recognition, which involves several key steps. First, sound capture. The device captures spoken words using a microphone and converts the analog sound waves into digital signals. Second, feature extraction. The system analyzes the digital signals to identify distinctive features such as pitch, tone, and frequency patterns. Third है pattern matching. These features are compared against stored patterns or models in the system's database, like phonemes or words. Fourth, character or word identification. Using algorithms like hidden Markov models or neural networks. The system determines the most likely characters or words spoken. Output generation. The recognized characters or words are then converted into text or commands for the computer. एक छोटा सा overview. Voice-based input devices recognize characters by converting speech into digital signals, extracting features, and matching them to known patterns to identify spoken characters or words accurately. हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके के होते हैं उनके लॉज, उनको फॉलो कर करके इनको करना था। सिंपलीफाई। ठीक है, अपना ओवरव्यू पढ़ देते हैं। The simplified function f equals to a into b, f equals to a into b complement f equals to a backslash c dot b complement can be implemented using two basic gates: a NOT gate to invert input b into b and
and AND gate to combine A and N. A and A and combine A and B complement B complement. This logic produces a true output only when A and A is true and B is false. Question D. Define SOP and POS form of Boolean function with the help of an example of each. Definition of SOP and POS forms of Boolean functions. First, sum of products. SOP का मतलब full form है. Sum of products form. Definition. SOP is a Boolean expression consisting of the OR sum or gate का OR है, sum of multiple and product. मतलब AND gate जब हम लगाते हैं जब हमें किसी उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, सॉरी प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, और इसका सम करना होता है मल्टीप्लिकेशन और गेट का. तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते तो ओ और एंड का यूज करेगा. ईच प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड a min term representing a unique combination of variables where the function is true. Example for variables A, B, C, a function in entropy form. फिर blah 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 blah. इनका ये बता रखे हैं. ठीक है, हमारा सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म. डेफिनेशन है हमारा इसका पीओएस is a Boolean expression consisting of the end and product of multiple or sum terms. मतलब जो निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ सम निकलेगा, एंड प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं और सम के लिए. ईच सम टर्म इज कॉल्ड अ मैक्स टर्म रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन वेयर द फंक्शन इज फॉल्स. एग्जाम्पल हमने यहाँ सीधा सा दे रखा है और बाकी ये सब आगे बढ़े. एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल्स ए बी सी a function in its form. फिर हमारा छोटा सा ओवरव्यू है. सम ऑफ प्रोडक्ट SOP form expresses a function as a sum or of product and terms where the function is true. POS product of sum form expresses a function as a product and of sum or terms where the function is false. Both forms provide standardized ways to represent and simplify Boolean functions for circuit design. अच्छा, इसके लिए भी एक वो होती है ट्रूथ टेबल, उसका यूज करके हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का पता चलता है कि फॉल्स मतलब कि फॉल्स निकल रहा है आंसर या वो निकल रहा है ट्रू. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सी शुरू हो रहा है. क्वेश्चन लिखना हम भूल गए, बट हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है. स्टार्ट करती है. ठीक है, व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप? A flip-flop is a basic registrable memory element in digital electronics that stores one bit of data. It has two stable states, 0 and 1, and can change state only at specific moments controlled by a clock signal. Difference between flip-flop and latch क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं. छोटा सा टेबल दे रखा है, आगे पढ़ सकते हो आप लोग. ठीक है, फीचर्स है लैच है फ्लिप फ्लॉप है. ये जो क्वेश्चन सी है हमारा व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप, वो ऊपर दे रखा है उसका आंसर, और बाकी जो उसका है व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम अ लैच वगैरह वगैरह ये सब भी ऊपर दे रखा है. लेकिन बाकी जो हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है और एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है वो हमने आंसर नीचे. ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है फर्स्ट मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट क्या है. कंबाइंस टू लैचेस, a master and a slave controlled by opposite phases of the clock working as when clock equals to 0, the master latch is enabled, transparent and stores in second. When clock equals to 1, so the slave latch is enabled and takes the master's output, updating the flip-flops up. This arrangement prevents changes during the clock's active phase, eliminating timing issues. Edge triggered flip-flop. इसका concept है changes state only at a specific clock edge, rising or falling. Working user internal master slave latches triggered on clock edges, so output updates only on the clock transition, making it deal for synchronous circuits. Types है दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव एज triggered on rising edge 0 to 1. Negative edge triggered on falling edge 1 to 0. ठीक है, फिर डायग्राम देख दिया. डायग्राम क्या करता है, शोज क्लॉक इनपुट एंड आउटपुट चेंजिंग रिस्पेक्ट क्लॉक. फिर हमारा छोटा सा ओवरव्यू है. फ्लिप फ्लॉप स्टोर अ सिंगल बिट
and update output on clock edges, unlike latches that respond to input levels. Master slave flip-flops use two latches with opposite clock enables to avoid timing glitches. The third है edge triggered flip-flops update output strictly at clock transition, ensuring precise synchronization in digital circuits. Third question पे हमारा assume that a computer system has a following memory. First, RAM 64 words with 16 bits. Second, cache of 8 blocks, block size 32 bits, minus 32 bits. Find in which location of cache memory or decimal address 21 can be found if direct mapping is found. Condition है हमारा तो हमें जो given है RAM size 64 words each 16 bits word size में इसका दे रखा है cache size दे रखा है 8 blocks block size 32 sorry excuse me. फिर है decimal address to find 21 mapping है direct map step 1 understand cache block size versus RAM word size RAM word size जो है the other 16 bits cache block size 32 bits India it's with the words आगे since each word is 16 bits it has step 2 calculate the number of blocks in RAM total RAM words is 64 plus words per block है 2 number of blocks in RAM 54 divided by 2 is 32 32 blocks हो गए 2 blocks से divide फिर है step 3 calculate the cache block index for direct mapping indirect mapping cache block index is found by फिर आगे हमारा step 4 find block number in RAM for address 21 address 21 corresponds to word number 21 in RAM each block has two words so block number is step 5 है calculate cache block number आंसर आया अपना the word at decimal address 21 maps to cache block number 2 indirect overview पढ़ देते हैं given a RAM with 64 words 16 bits each and a cache of 8 blocks 32 bits each direct mapping places each RAM block into a specific cache block based on the block number modulo the number of cache blocks. Address 21 falls into RAM block 10 since each block has two words. And mapping this block modulo 8 cache blocks results in cache block thus. Address 21 is stored in cache block number 2. अब आते हैं हम क्वेश्चन बी पे list the advantages and disadvantages of associative memory. क्वेश्चन है अपना advantages and disadvantages of associative memory. Advantages first fast data retrieval. Searches data by content rather than address enabling very quickly work. Second है parallel search capability. Can compare the input search word against all stored words simultaneously. Like third है the flexible matching. Can perform partial or exact matching. Useful in applications like cache memory. Fourth है अपना simplifies programming. No need to know the exact address of data. Disadvantages लिखे हैं अपना first expensive, second है limited size, third है power consumption, fourth है complex design. Expensive का है more complex hardware based associative memory consigned per speed up, cost higher than regular memory. Second जो था हमारा limited size practical implementation, limit size due to complexity and cost. Power consumption था high power usage because of simultaneous parallel comparisons. Complex design था difficult to design and scale compared to conventional memory. इसका छोटा सा overview. Associative memory offers rapid, flexible data access by searching content directly, but is limited by high cost, complexity, and power consumption, making it suitable mainly for specialized small size applications like cache memory. Question C पे आ गए हैं. Explain how RAID technology enhances the performance and reliability of data storage. Also, summarize the characteristics of any RAID level. Solution अपना Finally, here's an explanation of RAID technology and a summary of the common RAID level, followed by how RAID enhances performance and reliability. RAID, redundant array of independent disks combines multiple physical disks into one logical unit to improve data performance reliability of both by distributing data across disk performance by splitting data into blocks and distributing them across disk stripping RAID allows
Simultaneous read or write operations increasing speed. Third है हमारा reliability. RAID uses redundancy, mirroring, or parity, so that if one disk fails, data can still be recovered, reducing data loss risk and downtime. यहाँ पे characteristics है, ये भी आगे पढ़ेंगे वीडियो में. फिर अपना overview. Great technologies improve data storage systems by combining multiple disks to boost performance. Through parallel data access and enhance reliability via redundancy, different RAID levels balance speed and fault tolerance to suit various needs, such as RAID 0 for speed, RAID 1 for data protection, and RAID 5 for a balance of both. हालांकि यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ का एक पार्ट उसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रजिस्टर. फर्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर सेकंड है एड्रेस रजिस्टर एंड थर्ड है डाटा रजिस्टर. क्वेश्चन में हमें रोल बताना है रजिस्टर्स के, क्या काम करते हैं रजिस्टर. जनरल पर्पस रजिस्टर्स का क्या रोल होता है? इसका रोल है यूज टू टेम्परली स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और ऑपरेंड्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस. एग्जांपल है इसका, in the 8086 microprocessor registers like AX, BX, CX and DX. ये अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. इनको हर जो नाम है इनका टास्क इनको असाइंड होता है. जैसे कि DX होता है डाटा रजिस्टर, बाकी का भी कुछ कुछ होता है. तो आगे बढ़ते हैं. सेवरल जनरल पर्पस